I think we are live. Let me check एक बार. हाँ, we are live. Welcome everyone to Crick Domestic, and it's been a very long time. बहुत दिन हो गए since I think Syed Mushtaq Ali का group stage के time पे ही we came live, and today after Vijay Hazare Trophy Final, yes, we couldn't come live during the Syed Mushtaq Ali at the end of the season, but we will cover up everything in the next couple of weeks. Varun bhai और मैं we have a lot of things to talk about, so नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में बहुत कुछ हम लोग बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑल द वाइड वर्ल्ड टूर्नामेंट्स व्हिच हैपेंड. अंडर 23 का भी फाइनल हो चुका है एंड द टूर्नामेंट एंडेड एज वेल, एंड उसके बाद उसके बारे में भी बात करेंगे. बट टुडे the main talking point is Vijay Hazare Trophy Final. Karnataka has emerged champions. Karnataka has emerged champions, and it's their fifth title. Varun bhai is also joining with me. Welcome to him. बहुत दिनों के बाद we are here together. And कर्नाटका के बारे में मतलब we get straight to the point, क्योंकि कर्नाटका has turned up really well, and this trophy was a much needed trophy for them, क्योंकि बहुत दिन से आ नहीं रहे थे, क्योंकि दे आर रिगार्डेड, दे आर मतलब एक डोमेस्टिक क्रिकेटिंग जायंट उनके उनको मतलब बोलते हैं. एंड सम वेरी कंट्रोवर्शियल एंड सम वेरी हार्ड डिसीजंस हैड टू टेक बिफोर दिस Vijay Hazare Trophy tournament. For example, Manish Pandey was not selected, and Captain Mayank Agarwal led from the front, and so many things to talk about. We will come live again tomorrow. Me and Varun Bhai has already decided that we will come live tomorrow again to discuss the entire tournament. But today, especially, it will be the final. And let's start with Karnataka only. Karnataka Vijay Hazare Trophy Vijay Hazare Trophy 24-25 champions. Varun bhai क्या कहेंगे? It's their fifth title, joint second मतलब जॉइंट मोस्ट तमिलनाडु के साथ. क्या कहेंगे उनके पूरे टूर्नामेंट के बारे में? एक छोटी सी ब्रीफ एक आप समरी दे दीजिए. हाँ, देखिए पूरे टूर्नामेंट में ही देखा जाए तो कर्नाटक ने डोमिनेट किया है. ना सिर्फ आज 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 भी खैर उनका एक तरफा ही मैच लगा था. लास्ट में वो हर्ष दुबे ने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया. तो उसी तरह से यही कहानी रही है पूरे टूर्नामेंट में. सिर्फ एक ही मैच हारा है मतलब कर्नाटका, और बाकी सारे मैचेस इन्होंने जीते हैं और इजीली जीत रहे थे. जो जो कठिन मैचेस भी थे जहाँ पे लगा कि अब यहाँ ये मैच तो नहीं जीता जा सकता, वहां भी सरप्राइज किया काफी कर्नाटका की टीम ने. और जैसे कि एक मुंबई का मैच था, वहां 382-83 रन का टारगेट था और उसमें चेस करते हुए जीतना, ये तो असंभव सा ही लगता है वनडे क्रिकेट में. लेकिन वो मैच भी कर्नाटका की टीम जीती, तो एक काफी कुछ यहाँ पे श्रेय देना होगा उनके कप्तान मयंक अग्रवाल को, क्योंकि एक नई टीम इसको हम बोलेंगे, काफी नए खिलाड़ी हैं और उस टीम को ऐसे फाइनल तक लेके जाना. आज भी हम देख रहे थे कि कैसे मयंक अग्रवाल एक मतलब थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि हल्के में नहीं ले रहे थे. लास्ट में जब 8 विकेट गिर भी गया था और अभी मारना बिल्कुल स्टार्ट ही किया था वहाँ हर्ष दुबे ने, तभी वो काफी एक्टिव नजर आ रहे थे. एक छक्का पड़ने के बाद वो थोड़ा बॉलर को समझाते हुए दिखे थे. तो ऐसा है, कप्तानी उनका उनके उनकी काफी सही रही. और नए प्लेयर्स को किस तरीके से लेके आगे बढ़ना है, ना सिर्फ और उनका खुद के बल्ले से जैसे रन आए, तो काफी चीजें एक टीम के रूप में अच्छा आया है इनका कर्नाटका के लिए. और बड़ी बात है क्योंकि 2019-20 के फाइनल में जो इन्होंने विजय हजारे के तमिलनाडु को हराया था, वो पूरा मैच नहीं हो सका था वीजेडी मेथड से. उसके बाद से ये काफी 4-5 साल के लंबे अंतराल के बाद उनको एक और टाइटल मिला है. जी बिल्कुल, absolutely spot on from Varun bhai, and it was a much needed title, as we have as I have mentioned below, that it was a much needed title, क्योंकि बहुत दिन से as a a team like Karnataka not winning, especially in white ball cricket at this moment, is very surprising, क्योंकि they have some fantastic cricketers, and now as Varun bhai said, with the flavor of youngsters, actually that decision paid off actually, by not selecting Manish Pandey in the side, and actually going with the young blood, because आप अगर बैटिंग ऑर्डर भी देखे
only I think Mayank Agarwal is a bit is belong to that old Karnataka side which dominated last decade or so, वरुण भाई. बाकी सब तो मतलब नए बंदे ही हैं, ऑलमोस्ट नए बंदे हैं. So we'll talk about in detail, but first of all, is final में Vidarbha was also there and they had a fantastic season once again. Last year भी final खेले रणजी ट्रॉफी में, इस बार भी final पहुंच गए विजय हजारे ट्रॉफी में. So एक बहुत ही शांत स्वभाव की टीम, मतलब कुछ ज्यादा शोर नहीं है, इनका हाइप नहीं है, लेकिन they always do their job. And the main man in this season for Vidarbha has been none other than Karun Nair. He has been the talking point of this tournament, of this season, to be frank, Varun Bhai. Karun Nair, the batsman, uh, what a golden run, record-breaking season for the Vidarbha right-hander. What you wanna say? शुरू कीजिए. मतलब करुण नायर ने जो अभी कर दिखाया है, ऐसे तो काफी कम ऐसे खिलाड़ी होंगे जो पूरे टूर्नामेंट में, और इतना इतना ज्यादा पूरे टूर्नामेंट में ही वो 2 बार आउट हुए, और इस मैच के पहले सिर्फ एक बार वो अटल बिहारी बॉलर यूपी के बॉलर से आउट हुए थे, और आज आज वही था कि आज वही चल जाते तो मैच निकल जाता, क्योंकि 350 रन वैसे तो काफी ज्यादा होता है फाइनल में चेस करते हुए, लेकिन जब आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी हो जो 750 के एवरेज से खेल रहा हो, तो कोई भी स्कोर ऐसा बड़ा होता नहीं है। लेकिन वही है, वो जो अभिलेष अभिलाष सेठी ने उनको आउट किया, वहां से वो टर्निंग पॉइंट भी था मैच का, क्योंकि काफी इन्हीं पे डिपेंड थी ये टीम प्रसिद्ध प्रसिद्ध पूरी तरीके से। प्रसिद्ध कृष्ण, प्रसिद्ध कृष्ण. अच्छा अच्छा। हाँ, तो करुण नायर ही लेके चले हैं टीम को। देखिए हर एक, मतलब एक में उनका 40-44 नॉट आउट, उसके बाद लगातार इन्होंने शतक बनाए, शतक के साथ ही डील कर रहे थे। और वही था कि जो भी मैचेस हमने लाइव देखे उसमें ये दिखा कि ना सिर्फ रन बना रहे थे, बल्कि बैटिंग इतना इजी लग रहा था इनके लिए, मतलब जहां चाह रहे थे वहां खेल रहे थे। बॉल कहीं भी ऑफ में बॉल हो, उसको अगर फील्डर जिधर जिधर गैप है उधर ही इनका बॉल जा रहा था, या उधर मार रहे थे, कहीं पे भी बॉल हो, ऑफ में बॉल हो, उसको लेग साइड में खेल दे रहे थे। ऐसा ऐसा कुछ सेमीफाइनल में हमने देखा कि मतलब अ, काफी आसानी से बैटिंग करते हुए दिखे थे, हर एक शॉट लगा रहे थे, मतलब और चौके छक्के लास्ट में तो जैसा उन्होंने एक्सेलरेट किया पिछले मैच में, बल्कि जो छक्के चौके जिस हिसाब से लगाए, तो ऐसा बहुत ही शानदार फॉर्म में है। और इससे ज्यादा मतलब वही है कि टीम ही अभी ऐसी है, वनडे की टीम एक सेटल टीम है इंडिया की, इस वजह से वो उनका चैंपियन ट्रॉफी में हो नहीं पाए, चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं आ पाए। लेकिन इस परफॉर्मेंस के आसपास में मैच करना किसी भी प्लेयर के लिए आगे विजय हजारे ट्रॉफी में काफी मुश्किल होगा। और एक और चीज है कि ना सिर्फ ये विजय हजारे ट्रॉफी में ही हम उनके फॉर्म को देखें, बल्कि आप देखिए 2024 से अक्रॉस ऑल फॉर्मेट उनका एवरेज कुछ 60 का रहा है। 60 के एवरेज से इन्होंने 2300-2400 रन बनाए हैं 2024 से अभी तक, मतलब पिछले एक साल में इनका ऐसा ऐसा रहा है, कुछ 45-46 या कुछ ऐसी इनिंग्स में इन्होंने उतने रन बना दिए थे, और 60 का एवरेज रहा है अक्रॉस फॉर्मेट। तो यही है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फॉर्मेट को मिक्स किया जा रहा है। अगर कोई ये बात करे कि इनके इस परफॉर्मेंस से टेस्ट में क्या मतलब टेस्ट के भारतीय स्क्वाड में इनको शामिल किया जा सकता है, तो क्योंकि दोनों सारे फॉर्मेट में इन्होंने रन बनाए हैं, तो अगर वनडे की एक सेटल टीम है वहां नहीं बन पा रहा है जगह, तो देखिए टेस्ट की हमारी वैसे टीम है नहीं यहाँ। हम देखते हैं कि कभी सरफराज खान, कभी देवदत्त पट्टिकल, ध्रुव जुड़ेल और कई खिलाड़ियों को मौका मिलते रह रहा है, तो वहां पे इनका जगह बनते हुए देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इतने ज्यादा रन बनाने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम उस खिलाड़ी को कहीं कहीं तो मौका दें। और चैंपियन ट्रॉफी देखिए एक आईसीसी का टूर्नामेंट भी है, और आपको वहां किस प्लेयर को बाहर करते ये सब हो जाता है, तो उस हिसाब से करुण नायर नहीं खेल पाए। लेकिन ये टूर्नामेंट पे अगर हम लोग सिर्फ बात करें आगे ज्यादा ना सोचते हुए ही, तो यहाँ उन्होंने काफी जो जो भी हम लोग सोच सकते थे कि बैटिंग कैसे और किया जा सकता है, वो सब इन्होंने करके दिखाया, लगातार शतक और खुद मैच जिता रहे थे। और देखिए अगर थोड़ा सा और इस पे बात करें, तो यही उनके अगेंस्ट भी गया आज 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 के फाइनल में, क्योंकि इस मैच के पहले वो लगातार मतलब 5 विकेट से या उससे ज्यादा कभी भी ये टीम खोई नहीं थी, तो बैटिंग ही नहीं आया था। देखिए पिछले 3 मैचेस से तो ध्रुव सोरे शतक बना रहे थे और करुण नायर रन बना रहे थे, यही दोनों बैट्समैन मिलकर सारे रन उनका बना दे रहे थे। और तो बाकी खिलाड़ियों को खेलने का मौका ही नहीं मिला था, उसको उस तरीके से किसी के रन नहीं आए थे। एक जितेश शर्मा के पिछले मैच में कुछ रन आए, उन्होंने
50 बनाया, लेकिन उसके अलावा कोई भी प्लेयर था नहीं फॉर्म में, इसीलिए उनको पता भी नहीं चला कि अभी हर्ष जो है कितने बढ़िया प्लेयर है, क्योंकि उनका बैटिंग आया रहता, उन्होंने कुछ ऐसे छक्के वक्के लगाए रहते तो बेहतर जज करके उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सही से डिसाइड हुआ रहता, लेकिन वही है कि ये यही सारे फाइनल तक लाए थे, तो ये थोड़ा हो गया। And the biggest question here, Varun bhai, is there an Indian team comeback on the cards for Karun Nair? क्योंकि see, people has a misconception, थोड़ा बहुत misconception भी है वरुण भाई, you cannot deny it, that people think that Karun Nair was dropped from the Indian side, and मतलब बहुत ही नाइंसाफी हुआ था उनके साथ. See, when he came, जो ट्रिपल 100 मारा उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड इन चेन्नई 2016, obviously very big feat. There's been only another man from India who has scored triple century till date, that is Virendra Sehwag, none other than, and it's Karun Nair there now. But if you see how he came into the team, Varun bhai, if we remember, Rahane was injured, I think, and Rohit Sharma was also not available. So that is the reason he came in the side. From the next series, Rahane came back. Also, Rohit Sharma has to come back at some point in that middle order. So he lost that place. And उसके बाद जो इंडिया ए के साथ या डोमेस्टिक, he had a horrible run in domestic cricket. He couldn't score centuries for years for Karnataka. ये हमको याद रखना कर पड़ेगा. People have a misconception that Karun Nair was dropped. ये थोड़ा अभी नहीं है, लेकिन थोड़ा पहले होता था कि ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद आप ड्रॉप कर दिए. लॉट ऑफ पीपल पुट अ ब्लेम ऑन द सिलेक्टर्स, ऑन द कैप्टन, ऑन द कोच, बट करुण नायर ने वैसा कर दिया था बिकॉज ही हैड रन्स, छोड़िए सेंचुरीज नहीं थी इतने 4-5 साल में सिंस 2018. So Karun Nair had a very horrible 4-5 years with Karnataka in that phase, and वहां पे हनुमा विहारी जैसा एक प्लेयर निकल के आ गया. He got that place in the middle order of Indian Test side. उसके बाद जितने मतलब नए बंदे आए सब ऐसे ऐसे खेलते गए, बट करुण नायर लॉस्ट हिज रेडार. वो थोड़े मतलब ट्रेन के पटरी से थोड़ा हट गए. तो बट बट इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा एक प्लेयर मतलब बहुत मुश्किल होता है. बट वट एवर इट वॉज, हम लोग कुछ ज्यादा एनालाइज नहीं करते हैं उनके वीकनेस या क्यों फॉर्म खराब था. बट 2022 में व्हेन आई थिंक 2022 नहीं 23 में व्हेन विदर्भा का जो आया उनका ट्रांसफर फ्रॉम कर्नाटका टू विदर्भा, उससे पहले जो महाराजा ट्रॉफी हुआ था, आपको अगर याद होगा वरुण भाई, उस महाराजा ट्रॉफी से ही उनका फॉर्म बेहतर. He looked like he's coming back on his motto. Then he got a place in Vidarbha. अभी लगातार खेल रहे हैं. He played county cricket last season. Then again this time Maharaja Trophy he did well, as Varun bhai said. तो ये लास्ट 2 साल से approximately the fortune has changed for Karun Nair, and that might bring him back actually. क्योंकि आफ्टर स्पेशली आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी मिडिल ऑर्डर का बंदा परफॉर्म नहीं करेगा वो बाहर होगा, एंड करुण नायर might get his place there. And also Delhi Capitals has got him, Varun bhai. Delhi Capitals has acquired Karun Nair in the mega auction, and मैंने एक ट्वीट डाली थी ऑक्शन के बाद कि ऐसा ऐसा एक प्लेइंग 11 है दिल्ली कैपिटल्स का. इम्पैक्ट प्लेयर में करुण नायर वाज द ओनली बैट्समैन आई हैड. मतलब अगर कोई बैट्समैन चाहिए इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से, आई हैड करुण नायर एज ऑप्शन. बाकी बॉलर था और एक ऑलराउंडर था. तो तब मेनी पीपल माइट हैव थॉट दैट व्हाई करुण नायर. भाई भाई हम लोग तो देख रहे हैं भाई, बहुत अंडररेटेड, अभी सस्ता में मिल गया वो दिल्ली कैपिटल्स को. अभी कैसे वो यूटिलाइज करते हैं वो उन पे है. which position, what kind of match situation they want Karun Nair to come and bat for Delhi Capital. So वो देखना पड़ेगा. But this Vijay Hazare Trophy season जो था वो on the cards था मेरे हिसाब से. It's not surprising for me or even for you who has been following him from the last couple of years, क्योंकि जो उनका डिप हुआ था फॉर्म में सबसे ज्यादा हम लोग भी फॉलो कर रहे थे. हमको पता था क्यों डिप हो रहा है, क्यों इंडियन टीम से बाहर हुए, क्यों वो वापसी नहीं कर पा रहे, वो हमको पता था क्योंकि द काइंड ऑफ फॉर्म ही वाज हैविंग विद कर्नाटका फ्रॉम 2018. बट नाउ
अगेन कमिंग बैक इन फॉर्म, एंड वो जो स्टार्टिंग फेज था महाराज और ट्रॉफी से, वो हम लोगों ने भी फॉलो किया, तो वी आर नॉट सरप्राइज, एंड होपफुली ही कंटिन्यूज टू प्ले लाइक दिस। अभी देखिए एज भी है साइड में, इतना भी नहीं हुआ है अभी, इस एज में तो आके कोई कप्तान बन गया इंडियन टीम का। अभी जो कप्तान है वो तो 2 साल से बड़ा, 2 साल बड़ा ही है शायद मेरे ख्याल से करुण नायर से। तो अभी भी मतलब आ सकते हैं वापसी। टेस्ट टीम में देखना पड़ेगा क्या करते हैं। वरुण भाई ने भी आई थिंक एक ट्वीट किया था कि काउंटी क्रिकेट खेले एंड उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में देखते हैं कुछ अगर कर पाता है तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन टू सी। बट देखते हैं, बट करुण नायर डेफिनेटली नेक्स्ट 2 साल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उनके साथ। कैसा क्या डिसीजन लेती है इंडियन क्रिकेट उनके ऊपर, ये देखने लायक होगी। तो या हेड्स ऑफ, एंड दिस टूर्नामेंट क्या पूरा सीजन ही उनके नाम पे है। अभी रणजी ट्रॉफी बाकी है, ये फॉर्म अभी कंटिन्यू कर दे तो विदर्भा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो। बट या, बट कमिंग बैक टू टू द अदर टॉपिक्स फ्रॉम टुडेज, एज वरुण भाई सेड, विदर्भा के लिए एक एक दो और खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले, स्पेशली ध्रुव शोरे। ही हैड एन एब्सोल्यूट सेंचुरी परेड, मतलब लगातार क्वार्टर फाइनल में सेंचुरी, सेमीफाइनल में सेंचुरी एंड फाइनल में सेंचुरी। ही एक कमेंट मेरे को दिखाया था नवनीत से कि व्हाई ध्रुव शोरे वाज मूव फ्रॉम दिल्ली। वरुण भाई ये तो वो उनका थोड़ा अंदर की मामला है जो नीतीश राणा के साथ भी हुआ। सो दे हैड टू लीव दिल्ली। कुछ बोलेंगे इस पे ऊपर, ध्रुव शोरे के ऊपर? हाँ, और ध्रुव शोरे ने भी देखिए आते ही धमाल मचाया था, उसके बाद से थोड़ा शांत रहे थे, और अभी नॉकआउट में जैसा उन्होंने शतक लगाया था। और देखिए आज के उनके इनिंग्स में ज्यादा कुछ हम शिकायत कर नहीं सकते कि रन बॉल क्यों खेल गए हैं, मतलब इतना का था तो ऐसे ही खेला जाता है। अभी ऐसा नहीं है कि सारे प्लेयर 350 का सोच के ही अगर शुरू से खेलने लगे तो टीम ऑल आउट भी हो जाएगी। वो इनका वहां, अगर इस मैच के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है जितेश थोड़ा सा फंस गए। जितेश को थोड़ा बढ़िया खेलना चाहिए था, वो अपने शॉट को रोकने लगे, और वो उनका खेल है नहीं। थोड़े परेशान भी होने लगे। वो एक बड़ा ओवर देख रहे थे कि यहाँ से कुछ रन आ जाए, बल्कि वो अपना शॉट खेलते रहते तो थोड़ा मैच बन सकता था। बाकी देखिए आज भी बहुत बहुत बढ़िया खेला ध्रुव शोरे ने, और लगातार क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तीनों में शतक बनाना एक बहुत मतलब बड़ी बात है, और याद किया जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी के किसी इस सीजन का अगर हम जिक्र करेंगे जब भी तो वही है कि ये आए थे तभी इन्होंने बड़ा बड़ा स्कोर बनाना शुरू किया था। कुछ 250 प्लस किया थे, कुछ तो इनिंग खेल दी थी रणजी ट्रॉफी में। असम के अगेंस्ट ही इन्होंने काफी रन बनाए थे, और उसके बाद से फिर ये वाला रणजी ट्रॉफी में कुछ उतना खास अभी जा नहीं रहा था, लेकिन यहाँ जो उन्होंने रन बनाए हैं तो ये दोनों देखिए दो प्लेयर दोनों बाहर से आए हैं, और दोनों ही ने पहुंचाया एक तरीके से हम बोल सकते हैं विदर्भा को। उनके अपने जो ओपनर है वो तो बाहर बैठे हैं, अथरो ताइडे। तो इन दोनों ने बढ़िया किया है वैसे, इन्हीं के बदौलत पहुंची थी टीम फाइनल में। जी बिल्कुल, एंड टू द पॉइंट स्पॉट ऑन की जितेश शर्मा ने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि वही डिफरेंस बन गया लास्ट में। द काइंड ऑफ इनिंग जितेश शर्मा प्लेड एंड द काइंड ऑफ इनिंग्स अभिनव मनोहर प्लेड, एक्चुअली वो थोड़ा डिफरेंस हमको दिखा। अभिनव मनोहर ही इज द राइजिंग सुपरस्टार, क्योंकि उनको वो जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कर्नाटका के लिए इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, इट्स बीन इमेंसली इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड कुछ कुछ टूर्नामेंट में तो ही हैज बीन वन मैन आर्मी। जो हम लोगों ने महाराजा ट्रॉफी देखा था, ही वाज कंप्लीटली वन मैन आर्मी। एंड मतलब अभी देखिए आरसीबी शुड बी आल्सो बिट कंसर्न, क्योंकि जितेश शर्मा इज आउट ऑफ इंडियन स्कीम ऑफ थिंग्स एज वेल। इंडियन टीम में थे वो एक दो साल पहले, एक साल पहले। संजू सैमसन इज नाउ has been considered for T20, and जितेश शर्मा इज आई थिंक ओनली द सेकेंड और थर्ड चॉइस जो है। बट उनका जो फॉर्म है वो भी थोड़ा बहुत कंसर्निंग है। इसके पहले वाले मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस आया था वरुण भाई, वी हैव टू रिमेम्बर दैट। बट आई थिंक उनके अगेंस्ट कुछ ऐसे मतलब बॉलर्स प्लान बना सकते हैं आजकल उनके अगेंस्ट एट दिस पॉइंट। एंड आई थिंक थोड़ा सा पहले भी भेज दिया, हर दुबे को भेज सकते थे मेरे ख्याल से, या फिर द ऑलराउंडर, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर ऑफ विदर्भा, उनको भी भेज सकते थे इंस्टेड ऑफ जितेश शर्मा, क्योंकि हमको पता है कि वो थोड़ा थोड़ा सा भी अगर आगे आते हैं तो थोड़ा मतलब लड़खड़ाते हैं। ही नॉट यूज टू दैट कंडीशन, एंड और दैट इज नॉट हिज स्ट्रेंथ अगर हम बोलने जाए तो। बट अभिनव मनोहर एंड जितेश शर्मा, ये एक एक बैटल था दो टीमों में वरुण भाई।
जो अभिनव मनोहर डेफिनेटली हैज वन दिस बैटल क्वाइट क्लियरली। क्या बोलना चाहेंगे अभिनव मनोहर? अभी तो सनराइजर्स ने ले लिया हाँ, आईपीएल में, अब बिग मिस फॉर। और देखिए अभिनव अभिनव मनोहर भी बहुत बहुत कुछ नहीं कर रहे थे, ये पूरा हम सीजन उठा के देखें तो स्मैट हो या ये हो, जिस तरीके से उनका महाराजा ट्रॉफी और केसीए टूर्नामेंट रहा था उस हिसाब से इनका बल्ला यहाँ खामोश रहा था। एक शायद अर्श तक आया था इस मैच के पहले और बाकी कुछ वो करते हुए दिखे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा स्टेज था और वहां रन बनाने की जरूरत भी थी। तेजी से अगर वो रन रन नहीं बनाए होते तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से विदर्भा जीत जीत चुकी होती है ये मैच। तो वहां उन्होंने जिस तरीके से छक्के लगाए और एक ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, अगर हम इनको बैटिंग करते हुए देखते हैं तो बहुत अधिक प्रयास करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ये ओवर चल रहा है, शांति से सिंगल डबल खेल रहे हैं और एक बॉल पे ही अटेम्प्ट करेंगे शॉट, छक्का तो छक्का ही होता है। और उस तरीके से के खिलाड़ी हैं ये, तब सोच ले बॉल पिक कर ले, ये छक्का मारना है तो बाउंड्री क्लियर कर देते हैं। तो इनके उस तरीके से फिनिशिंग एबिलिटीज या छक्के लगाने की काबिलियत में किसी प्रकार का मतलब हम लोग संदेह नहीं कर सकते हैं। तो बढ़िया इनका था ही और इन्होंने फिनिश किया। एज आई सेड कि ये थोड़ा सा डिसाइसिव हो गया। अभिनव मनोहर का जो इनिंग्स था दैट एक्चुअली रियली पुश्ड कर्नाटका टोटल टू सम, मतलब एक होता है ना कि अनरीचेबल इतने अच्छे सरफेस पे भी 349 और 348, इट वाज अ वेरी गुड टोटल आई थिंक। वो पता अभिनव मनोहर gave the much needed finish to that Karnataka innings, and that was very clinical, to be precise. But before that, Karnataka were 67 for 3. वरुण भाई, कौन है ये प्लेयर? कौन दो, चलो दो प्लेयर ऐसे, मतलब एक पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा बड़ा पार्टनरशिप उनको, दे नीडेड दैट पार्टनरशिप, एंड आर स्मरण is the next superstar in the making. He led from the front, century in the final. क्या कहेंगे वरुण भाई? क्योंकि देखिए, आई read an article of cricket.com, I think, if I'm not wrong, जो इनका इंटरव्यू लिया था इन्होंने महाराजा ट्रॉफी के टाइम पे। महाराजा ट्रॉफी से पहले आर स्मरण वाज रिगार्डेड एज समवन हु विल बी फिट फॉर द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम। रेड बॉल में ये इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। अंडर 23 लास्ट ईयर आई थिंक कैप्टन थे कर्नाटका जो जीती थी सीके नायडू ट्रॉफी। आई थिंक आर स्मरण वाज कैप्टन एंड one of the best batter in that lineup. But now in the Maharaja Trophy, he had scored some fabulous runs at a strike rate of 140 plus 145 around, itna hi hoga if I'm not wrong, and including a century in Maharaja Trophy. So उस टूर्नामेंट के बाद से आर स्मरण सेड कि आई वांट टू प्रूव एवरीवन दैट आई एम आल्सो फिट फॉर वाइट बॉल फॉर्मेट में भी मैं फिट होना चाहता हूं एंड हो सकता हूं। दैट्स व्हाट आर स्मरण सेड इन दैट इंटरव्यू। उसके बाद उन्होंने सईद मुश्ताक अली खेला, अभी ये खेल रहे हैं, मतलब व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज गिवन इवन इन द सेमीफाइनल। वरुण भाई बहुत ही मतलब कुछ कहीं भी जा सकता था वो गेम अगर इनका वो इनिंग्स नहीं आता। अभी फाइनल में भी वेरी क्रिटिकल पोजीशन पे इन्होंने बैटिंग की एंड दैट पार्टनरशिप रियली सेव्ड द गेम फॉर कर्नाटका एंड एक्चुअली मैच विनिंग सेंचुरी, टू बी प्रिसाइज बोल सकते हैं। क्या कहें? देखिए वही है कि इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी अपना शुरुआत किया शतक के साथ पुडुचेरी के अगेंस्ट और आज खत्म भी किया टाइटल जिताते हुए सेंचुरी के साथ। तो काफी शानदार रहा है इनका इनका ये हम लोग बोल सकते हैं कि इस सीजन के ये फाइनल है। हम लोग रणजी ट्रॉफी की बात करें या यहाँ विजय हजारे ट्रॉफी हो, दोनों ही इनका काफी शानदार शानदार गया है। और इसके पहले वो रन बना रहे थे, काफी रन बना रहे थे सीके नायडू ट्रॉफी में, ये और केवी अनीस जो है दोनों ही ने बहुत ज्यादा रन बनाए थे। लेकिन इनका महाराजा ट्रॉफी भी रहा और जिस तरीके से ये अभी छक्के चौके लगा रहे हैं और कुछ एक शॉट तो जैसे ये खेल रहे थे, एक जो इन्होंने आगे मतलब बिल्कुल जो आगे एक छक्का मारा चौका आ गया जो, तो काफी मुश्किल शॉट खेल रहे थे ये। हमने देखा कि इनमें काफी काफी ज्यादा शॉट खेलने की अभी शॉट ऐड किया है इन्होंने अपने गेम में, जो पहले मिसिंग नजर आ रहा था। वहीं केवी अनीस देखें तो थोड़ा सा फंसे हुए दिखते हैं, थोड़ा स्ट्राइक रेट उनका स्लो चला जाता है शुरू में आगे कैसे कैसे आगे बढ़ाना है इनिंग्स को। लेकिन दोनों ही यंगस्टर में से दोनों के पास क्षमता है कि आगे चल के काफी जैसे जैसे मनीष पांडे और करुण नायर इन सब कुछ खिलाड़ियों ने वहां कर्नाटका के लिए लगातार ट्रॉफी जिताए थे इन्होंने 2013-14 के बाद से। तो
ये 2-3 खिलाड़ी भी वैसा ही कुछ कर सकते हैं। मगर नायर खास तौर पे जिस तरीके से, और एक होता है कि सेमीफाइनल फाइनल में खिलाड़ी कैसे रिएक्ट करता है। 67 रन पे 3 विकेट गिर गए हैं, वहां से 180 रन का पार्टनरशिप बनाना, और दूसरा खिलाड़ी जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप बनाया है वो भी अपने आप में काफी खास है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का कॉन्ट्रैक्ट पाना ही उनकी काबिलियत को बताता है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने गेम को आगे बढ़ाया, छक्के चौके भी लगा रहे हैं कैसे, तो काफी तगड़ी टीम। मतलब कर्नाटका एक ऐसी साइड है जो देखिए एक प्लेयर जाता है और दूसरा प्लेयर अचानक से आके मैच जिताने लगता है, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मुंबई की तो बात करते हैं, लेकिन कर्नाटका देखिए आप, उनकी बॉलिंग देखिए, वहां उनके मेन बॉलर विद्वत कावरप्पा नहीं खेल रहे हैं। दूसरा बॉलर विजय कुमार बेसक जो इंडियन टीम का एक खिलाड़ी है, अभी साउथ अफ्रीका हो गए थे, वो भी 1-2 मैचेस खेल के हट जाते हैं। एक और जो उनका बैकअप पेसर या खेलते रहता है प्लेयर विद्याधर पाटिल, वो भी कुछ 2-3 मैच खेल के ड्रॉप हो जाते हैं या हट जाते हैं, जो भी है उनको। लेकिन नया प्लेयर एक अभिलाष सेठी आते हैं, अभिलाष सेठी जैसे बढ़िया बॉलिंग करते हैं, या मतलब कोई भी प्लेयर आ रहा है मैच जिता रहा है। प्रवीण दुबे इवन हम जो शुरुआती एक मैच खेला उन्होंने 60 नॉट आउट रन बना दिए एक मैच में, जो उन्होंने उनके इनिंग्स की वजह से टीम मैच जीती। तो इस प्रकार से टीम के सारे खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन एक प्लेयर अगर चुनना हो कप्तान के अलावा, तो स्मरण नाग हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ एक फेलियर है इनका, मतलब एक में 4-5 रन पे आउट हो गए थे ये पंजाब के अगेंस्ट। उसके अलावा ये इनका जब भी आया है बैटिंग, तो इन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है अपनी टीम के लिए। जी, बिल्कुल। और अभिलाष शेट्टी का आपने मेंशन किया, डेफिनेटली अभी देखिए वासुकी कौशिक हैज टू ग्रेट companions in that pace bowling attack, but अभिलाष शेट्टी was definitely a new option to have and left arm option. ये नए बॉल के साथ भी बहुत अच्छा फेंक सकते हैं, लेकिन आई थिंक दे अंडर यूटिलाइज, बट स्टिल 16 17 विकेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 या 17 विकेट्स इन द टूर्नामेंट. अभिलाष शेट्टी, व्हाट अ ग्रेट टूर्नामेंट ही हैड. आल्सो एवरेज बहुत अच्छा था इनका, 20 के नीचे एवरेज था पूरे बॉलिंग लाइनअप का. 20 के नीचे एवरेज नहीं था मेरे ख्याल से अभिलाष शेट्टी का जितना था. एंड let's not forget that Abhilash Shetty was one of the targets for Chennai Super Kings. They got Gurjap Neat, but Abhilash Shetty was also their target. He also gave trials to Mumbai Indians as well. But unfortunately, I think select नहीं हुए, कोई भी एक टीम ली नहीं इनको IPL auction में, if I'm not wrong. But definitely a very good start to his least stake career. एक ट्रॉफी भी आ गई. So यही वरुण भाई जो he was telling from the start of the stream that it's a very relatively a very young side, Karnataka side, which had to take some very hard decisions by means सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा मतलब बोलने के लिए कि थैंक यू वेरी मच, बट वी आर लुकिंग एट सम यंग ऑप्शंस एंड द यंग ऑप्शंस आर डिलीवर्ड. वरुण भाई क्या कहेंगे? हाँ, वही वही और ज्यादा विशेष है इनका ट्रॉफी के साथ ही। जैसे देखिए 3 प्लेयर हैं अभी, केएल श्रीजीत तो खैर पहले उन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन मैचेस खेले नहीं थे। केवी अनीस और इनका देखिए, तो केवी अनीस पहले एक बार टीम से आए हैं, लेकिन करियर का शुरुआत, लिस्ट करियर का हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हुआ है। तीनों का है, और मिडिल ऑर्डर में आपका 3 प्लेयर, अगर नया प्लेयर हो, और देखिए देवदत्त पट्टिकल भी तो अभी ही आए हैं, इसके 2-3 मैच पहले आए, उसके पहले तो वहां भी निकिन जोश खेल रहे थे यार, निकिन जो भी उनका टाइटल का प्रोनाउंसिएशन है। तो ये है कि ऐसे नए प्लेयर, मतलब वही वही एक बताता है कि कैप्टन का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मतलब ऐसे नए प्लेयर को अपने साथ में लेके वो आगे चले आगे। तो ये मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा, भरत सर हैज जॉइंड अस फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट नोटिस. सॉरी, apologies सर, but we were very excited to have you today, especially Karnataka won their 5th title. Straight to the point I want to go, कि Karun Nair, what he has done and what kind, well, means आपका मतलब point of view, I want to know that where do you see Karun Nair at this moment in Indian cricket point of view? You see, Karun Nair obviously has had a great season. He has also played well in county cricket. Very good shot maker. That's what I remember Karun Nair, even when he was playing for Karnataka. Maybe at times he didn't realize his potential in terms of his shot making. A very fluent player, a lot of punches, cuts, drives. Maybe there is, as I've noted on Twitter, a few of Karun Nair fans got angry, but
I genuinely believe he has a problem with the nip packer. That's what I remember even when he played for Karnataka, even before he made a test series, even maybe before he made his debut in Test cricket. That could be a problem for him if he goes and plays Test cricket. But yeah, I wish him well. He's someone who's a very eye-catching player in the sense that he plays a lot of these punches, cuts, Yeah, drives, good flicks. But again, it depends on economy of moment. Like a lot of these classical players that you get right from Damon Martin, David Cover, even Ganguly, all these guys. So Karun Nair also depends on economy of moment, or for the matter, Rohit Sharma at times, not always. Sometimes he added a trigger in that yeah, Test series against England in 2021. But again, all these players depend on economy of moment. So even Rudraj Gaikwad. So when it goes wrong, it actually it does look wrong. But when it goes well, these kind of players look like the $1 million batters at the crease. absolutely spot on. And let's see where he stands actually after the Champions Trophy, and especially also Delhi Capitals. I want to see how they use Karun Nair, because IPL IPL से ही चलता है Indian cricket to some extent. So we need to see where he stands and how And uh, and you can the also get into the test side because there are a lot of holes in that Indian test side at present. yeah, If you notice, obviously 2-3 holes. There are even there's a lot of scrutiny on Shubman Gill. Obviously, Rohit yeah. Sharma may not play in the test. I know he's an opener, but there are enough holes in that Indian test lineup. I guess it's a better chance to get into the test side than one day side at present. जी, बिल्कुल absolutely spot on. So there's a lot of things ahead of Karna to grab on. But there's a question for you straight away, Bharat sir. Ask Bharat sir how big this was for Shreyas Gopal as he had left for Kerala and returned back. Yes, Shreyas Gopal had a very good season as well. Bharat sir, this is Viran Shah from I think I forgetting his publication, but yeah, Viran Shah is a very good friend of mine. So he has a question here. What do you see? How he did he bowled? Did you observed him? Notably, he had a very good spell today as well. He was very economical in that important phase towards the end. How do you see Shreyas Gopal going in this tournament? 18 wickets, I think, if I'm not wrong, in the He's tournament. very experienced. See, I think I made one tweet maybe 3 months ago or something on those lines. I was watching him in a Ranji Trophy game. Yes, Ranji Trophy game against maybe Bengal in November. Mohammad Shami didn't play in that game. It seemed like there was a little bit of different size Gopal because he was trying to flight the ball a little more, trying to get a little more drift. Maybe he's experimenting. So I guess he's continued on that vein. He's not just ball flat. Even this game with a lot of dew around, on occasions he was trying to mix up his pace. I guess that is why he's taken all those wickets. He has been on a downwards slide for 3-4 seasons. I understand because I remember there was a game, 50-over game against Mumbai. I guess when Shivam Dubey absolutely smashed him. Though he bowls a few good spells after that, but it seemed like that one particular game rattled Shreyas Gopal a lot. He went for something like 112 runs in 8 overs or 9 overs or whatever. So it's good to see that he's kind of made a comeback. I know he has also been picked in the IPL. Uh, Hopefully it will go well for him. I think one of his greatest strengths has been how he's mixed up his pace, especially with dew around. It was never going to be easy to go for 55 runs in 10 overs in those conditions. I think you have to give it to him. I have a question about Devdutt Patikal. His feet movement, so his front foot was not going anywhere against Yash Thakur. So Yeah, he's in great form, scoring runs, but initially he did struggle against him. So Yeah, that is basically how Devdutt Padikal or Rituraj Gaikwad or sometimes Karun Nair play. Basically, they depend on economy of moment. The moments are very small. When they get it right, when they get it right, it looks very good, very pleasing on the eye. Basically,
he moves forward just enough or moves back just enough. He doesn't have a trigger. Same with Rituraj Gaikwad. So he needs to get all those small moments in sync. That is when such players would do well. So such players have to be mentally strong. Even I would say the same with Rutraj Gaikwad, because people will again troll him when he gets caught behind in the slip cordon. People will tell he doesn't have footwork and he's chasing deliveries outside off. And it's exactly the same for Padikkal, especially in the social media era. All these players have to be mentally strong because they depend on economy of moment, the basically small moments. Yeah, definitely. On that, that question was very on the cards, and Varun Bhai was hit the nail on the head. Devdutt Padikkal, the one-day batter. What do you see? Means what do you see him as a future? Yeah, definitely. You already said a couple of things about. But how do you see that? मतलब, is there a place to grab on, especially in the white ball? Because red ball में is in the scheme of things. It looks like, but white ball में, what do you see? How far he can go from here? Yes, see, one day cricket perhaps suits him the best because it doesn't wide Kookaburra ball doesn't move much, and unlike T20 cricket, he can take his own time to get his eye in. So I guess his best format is wide ball cricket or 50-over cricket. But for that, some of the seniors have to retire, I guess. Then only we'll get a chance because currently the ODI setup is pretty much packed. If you look at the top six, how to take out someone like Shai Sair, because he was doing well as well in this particular format. Yeah, obviously there are a lot of there is a lot of criticism on one particular KL Rahul because of how he played in that 50-over World Cup final, but still he got all those runs in that 50-over World Cup as well. So it's pretty much a packed side. So, but his best format is the 50-over format only because the ball doesn't move much, White Kookaburra, and secondly, obviously he can take his time, unlike what happened for him in the T20 format while playing for Lucknow Super Giants on some of those very slow wickets. Yeah. Couple of question more for Bharat sir. Yash Thakur, who by the looks of it has been doing really very decently well in white ball cricket in Indian domestic circuit. How much means do India need a bowler like him, especially in T20s? Okay, one day cricket maybe there are more other options, but in T20 cricket as well, Yash Thakur has been doing really well. Yeah, T20 cricket maybe, but these days format is such that, especially on such flat wickets, especially on flat wickets, IPL teams as well, if you look at it, they're basically looking for this left arm bowler, left arm pace bowler, or someone who's good at, obviously, I keep talking about it, hitting the deck, hit the deck skills, and trying to be very defensive. I'm not just hit the deck skills, you have to be really defensive with your hit the deck skills in terms of the angles, in terms of the lines you bowl. Yash Thakur is good, but it's kind of in between in that sense. Sometimes he kind of hits the bat hard on impact. He can also bowl decent Yorkers, but it doesn't seem like he's one of those top hit the deck fast bowlers who can bowl defenses, who can also be good at defensive skills. Maybe we'll get there in a Yeah. season or two. But at present, I guess if you look at India's T20 team, then that's if all bowlers are fit, then I would go for Mayank Yadav, Jasprit Bumrah, and Varun Chakravarti. These kind of bowlers I will go for because I think there's a gun attack for me because Mayank Yadav and Jasprit Bumrah will really do well because both of them hit the pitch hard, hit the bat hard on impact. Obviously, Bumrah has a lot of other skills as well. But by the term hit the deck, another topic comes to my mind. Bharat sir, you can, I think, leave after this if you, as he already said that he can come on. It's my mistake only. I asked him very late. But no Prasidh Krishna in India's Champions Trophy plans. At least if there's not Siraj, maybe Prasidh Krishna had a chance as well because one day team में scheme of things में he has been there. He was also, I think, a replacement of Hardik Pandya in the World Cup squad. Yes, see, my opinion on Prasidh Krishna doesn't change. He's a genuine wicket taker.
which you saw in the Sydney Test, which you've seen even in the Vijay Hazare Trophy. But he's someone, I have two problems with him. Always had two problems. Even when he played against Bangladesh in 2015, in his first game, when someone attacks him, he tends to lose the plot that you saw today as well. And at that time, it doesn't really use his head, because I felt that if you look at someone like Harsh Dubey, if he's clearly staying leg side of the ball, his back foot was going towards the leg side of the ball. So basically, Prasidh Krishna, what he had to do was go around the wicket, tuck him up for room. He would have definitely got away from punishment, but he kept bowling over the wicket and got smashed. So these are the two issues with him. So if India have to select someone like Prasidh Krishna, then they have to look at his wicket taking ability, because he's going to take you wickets. You saw that with Karun Nair as well. No one else executed the plan that I talked about, the nip packer, but finally it was Prasidh Krishna who did it. But he's going to go for plenty when someone attacks him. Then so I guess if really India wanted to pick him, then it was for the middle overs. But they already have someone like Mohammad Shami for the middle overs. And the long overs, last 2-3 overs, I definitely won't trust Prasidh Krishna in a limited overs game, even in a T20 game, because once he gets hit, he gets absolutely smashed. Okay, I almost felt like I was wishing that I was there on the field, at least in the backroom staff. I would have told him, go round the wicket. Why are you bowling over the wicket? Can't you see the batter is staying leg side of the ball? Why can't think through? I'm not sure, because maybe I also observed. I have also observed this thing. I think Varun Bhai also will not deny that Prasidh Krishna really think means he is a bit. He went into he goes into a shell when he starts to concede runs. He doesn't like. It doesn't look like he use मतलब कुछ अलग करते हैं वो try something else, but he will go like blank. He will go clueless. What I think that's what you want to say, जो मैं थोड़ा expressive way में I am saying. और और भी मतलब ये हर्षित राणा की राइज के बाद थोड़ा सा उनके और चांसेस डाउन हुए हैं टीम में आने के लिए, क्योंकि वो भी थोड़ा हिट द डेक बॉल काइंड ऑफ बॉलर है. तो similar bowlers, maybe Harshit Rana is a little better in terms of learning the tricks. That's what Bharat Taran also told in an interview. That could be a reason, one of the reasons, and he's also younger than Prasidh Krishna. So maybe they're thinking, because he's much younger than Prasidh Krishna, that they will look at him. Yeah. So Bharat sir, thank you very much. You can stay for another 10 minutes if you really want to. Yeah. Okay. Oh, glad. But मैं मतलब I was trying to make it short because you already said. But very glad that you are here. But Varun bhai, coming back to you, हर्ष दुबे, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप इनके बारे में, because he is performing very well at all levels and everywhere he is doing well, especially red ball cricket में. You see him someone replacing like Ravindra Jadeja in the near future? हाँ देखिए, हर्ष दुबे का वही कि ये इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे थे, मतलब अपना जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है, लेकिन आज उनको जैसा बैटिंग करते हुए हमने देखा, और इसके पहले वो अंडर 23 में लंबी इनिंग खेल चुके हैं, जैसे शतक और 150 ऐसे इनिंग भी वो खेलते रहे. तो आज उनको नीचे भेजा गया, लेकिन उनमें बैटिंग की वो एबिलिटीज है. हमने देखा कि वो प्रसिद्ध कृष्णा को कैसे आगे एक शॉट मारा, उसके बाद कैसे वो वाइड यॉर्कर के लिए ऑलमोस्ट तैयार थे, और उधर उन्होंने एक चौका या छक्का जड़ दिया. तो उस तरीके से एक कॉन्फिडेंस भी उनके बैटिंग में दिखा, और छक्के चौके लगाते हुए आज तो दिखे ही. लेकिन अगर हम जडेजा के पॉसिबल रिप्लेसमेंट की बात करें, तो वहां थोड़ा निशांत सिंधु उनसे आगे दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर बैटिंग करते हुए भी दिख जाते हैं, और टेस्ट मैच में भी उनका एक जगह है. लेकिन अभी ये इनको हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम मानव सूथर को एक ऑलराउंडर के रूप में देख रहे थे. वहां वो थोड़ा सा सौरभ कुमार टाइप के ऑलराउंडर में चले जाएंगे. उनका बॉलिंग ही उनका एक मेन है, मतलब जॉब. लेकिन अगर ऑलराउंडर की बात करें, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में जो भी है, अक्षर पटेल के बाद तो अभी डोमेस्टिक में तो यही दिख रहे हैं. और अंडर 23 में ऐसा करते जा रहे थे हर्ष दुबे, लेकिन
यहाँ पे पहली बार हमने देखा कि बड़े स्टेज पे भी वो बढ़िया करके गए हैं, बॉलिंग भी इनका सही जा रहा था। ये भी यहाँ भी थोड़ा सा गलती शायद कर दिया है करुण नायर ने, क्योंकि दो मतलब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेलने लगे तो वो थोड़ा सा खुद ही बॉलिंग करने आ गए और एक और दोनों साइड से ऑफ स्पिनर लगा दिए। लेकिन वही जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सेट हो जाता है, रन बना लेता है, तो फिर लेफ्ट आर्म बॉलर को लाना पड़ता है। तो इससे अच्छा अभी वो शुरुआत में उन्होंने रन नहीं दिया था, 5 ओवर में 15 रन कुछ ऐसे दिए थे, तो वहीं थोड़ा उनके ओवर करा लिए जाते तो क्या पता 67 पे 3 था, एक आध आउट आउट भी हो सकते थे। Some of the decisions were definitely paid off for the Karnataka middle order. And coming to Bharat sir, we already discussed this topic way back, I think during Dulip Trophy only. That left arm spin all rounder. We talked about Sai Kishore, right? Yeah, Sai Kishore. Then we talk about Manav Suthar, and now where do you see Harsh Dubey in that category? Yes, his batting obviously reminds me a little bit of Rahul Tewatia. He's someone who has that batting smarts, I guess. Way he uses the moves around in the crease. He definitely makes me remember Rahul Tewatia. That's what it did with that reverse scoop or lap or whatever I tried. Uh, I think that he's someone again, just like Rahul Tewatia, stays leg side of the ball. So basically, if you look at his technique, he will play a lot of shots through maybe backward point, maybe the occasional shot through mid wicket, behind square, both sides behind square, and one over long on. That are the areas he will play. So if someone looks like a very smart batter, obviously seen a little bit of his left arm spin as well. But as far as batting is concerned, I think someone who comes across like Rahul Tewatia, very smart kind of batter who will move across in a crease and try to upset bowlers. Lens obviously will get pace bowlers or smarter than Prasidh Krishna, or pace bowlers who will try to implement their plans a little better. I'm not saying Prasidh Krishna is not smart, but try to implement their plans under pressure. But that's what I saw in someone like Harsh Dubey. He's a very smart batter and someone who doesn't falter under pressure. Yeah, I think yeah, Harsh Dubey, I think ये जैसे जैसे वरुण भाई ने बोला कि under 23 में he has done really well, and Bharat sir also had a very brief summary on what I think he can do, or what the bowlers need to do to stop him at this stage. But as a growing all-rounder at under 23 से अभी senior level पे performance आ रहा है, और भी चाहिए होगा to come in the scheme of things, and replacing someone like Jaddu or Akshay Patel is not easy at this level. So definitely a player to watch out. But yeah, I think we covered up everything. Varun bhai, Mike Agarwal's Karnataka has done the unthinkable. Unthinkable इसलिए बोल रहा हूँ. I don't think that Bharat sir also will deny it, because it's a team on transition. Bharat sir, Captain Mike Agarwal brilliance definitely. What do you see? Yeah, I actually interviewed Yarek Gaud on this in November. There's an interview of mine. In November, I interviewed him. I asked him about transition phase. Then at that time, he was talking about Anish, Shirjit. These players had Yeah. not made their Karnataka debuts at that time, I guess. So he was talking about these two players. He was also talking about Smaran as someone who is calm and collected. Good to see that all his players have come through. And Yare Gowda, someone who was coach of the Karnataka side, even in the Coach Bihar Trophy. That is where they had won. So Yare Gowda had seen all these players, Anish, Smaran, and all. So he has helped them to come through the system, and it is bearing and it is basically reaping benefits for him. And obviously, he also tried with Lavanit Sisodia. Again, he got an injury, had an injury, wrist injury. That is why Sirjit came into that Karnataka setup and he started scoring runs. Yeah, it was good to see that all the players that is backed are coming through. But Karnataka have a lot of good players coming through as well. Yeah. Look at Maharaja Trophy. I was watching Maharaja Trophy. There's a player called Hardy or something like that, and there are other players
this LR Norona, Kumar, Norona, Norona. yeah, Naruna, that guy only I was trying to tell. LR Kumar, Manwant Kumar. Yeah, there are a lot of players coming through. There was Tubang another, Hegre is doing well. Tubang Hegre yes, is doing well, yes, also well as an there's all-rounder. another one, Nagraj or whatever was his name, who was bowling Yeah, quite good. Nagaraj. And Abhilash Under Shetty 19 also. India. Abhilash Shetty also have asked him in that Maharaja Trophy. Is someone who's a very spirited cricketer. Maybe, hopefully, will learn to swing the ball a little bit. Otherwise, at his pace, 135, 136, yeah, in the IPL or something on those lines, if he goes and plays, then he might be hit around. But he's a very spirited cricketer. And yeah, the thing is, Karnataka have the players, and with the Aragod as the coach, you expect results because someone is just like basically is domestic cricket's Rahul Dravid, I would say. Very calm, composed, collected. Even when he was playing for Railways or before that Karnataka, that is how he came across in domestic cricket. Yeah, definitely. And Mayank Agarwal, I also, just want to add a bit of Mayank Agarwal. I talk so much of Yarek just to no, give me one bit here. You see, Mayank Agarwal, the best part of Mayank Agarwal, what I saw in the final was his bowling changes. If you look at yeah, Karun Nair came out to bat, he knew straight away that only one bowler can get him out, and he brought Prasidh Krishna into that attack because he knew he could force Karun Nair to do certain mistakes. And that's what really was impressive about him. He changed he really rotated his bowlers really well. When Prasidh Krishna was hit around in his first 2 overs, he took him off the attack, brought Abhilash Shetty. When Karun Nair came out to bat again, how he used Prasidh Krishna and how he used the spinners in the middle overs, and then again how he used the pace bowlers right at the end. He was always looking for wickets, and I always believe that finally it is about taking wickets, taking 10 wickets, and that is where Mayank Agarwal was really good. and by the point, just to conclude all the things, Bharat sir said that the young players has come out really well. So many young players have delivered in throughout the tournament. And not to forget that Bharat sir and Varun Bhai, they also won the CK Naidu Trophy last year under the captaincy of R. Smaran. So promising players coming out from Karnataka now. Also, there are many under 19 players who are doing well. I definitely we covered a couple of them. Varun Bhai in the I think in Vinu Mankat Trophy that stream as well. But now also Kuch Bihar Trophy took place. We have a lot of things to talk about. Vijay Hazare Trophy के बारे में we will talk about in detail tomorrow because today it was all about the final. And thanks to Bharat sir for joining us. I think we are end of the stream and we have covered everything almost from this final. Don't keep telling Uh, sir. I'm not a sir. So नहीं 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 नहीं, आप हमारे लिए तो सर है भाई ये आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट बट या थैंक यू वेरी मच इतना शॉर्ट नोटिस में मैंने just messaged sir and sir was ready to come, so thanks very much and hope to see you again in near future here joining us. And yeah, Varun bhai, thanks to you as well. कल मिलते हैं विजय हजारे के ट्रॉफी का डिटेल में हम लोग बात करेंगे. There are a lot of things to talk about the upcoming players, who are the best debutants, the bowlers to watch out in this format, and also Saeed Mushtaq Ali Trophy के बारे में भी हमको बात करना है. We are coming live after like 1.5 months. We didn't cover Saeed Mushtaq Ali Trophy, so yeah, in this week we will try to cover it up everything. Thanks everyone for to join. Thank you very much. See you.